We will discuss starting with question number 26. Meiotic divisions in ovule take place in nucleus. Nucleus में होता है. Vallisneria spiralis is a perfect classic example of. It is the example of epihydrophily. हमने देखा भी था example. A pollen tube of flowering plant is the male gametophyte. Which of the following plants bears anemophilous flowers? तो ये बेटा ये इसका होगा maize. Which of these is mismatched? कौन सा mismatched है? Plumule leaves, pericarp, cotyledons, seed leaf, apicotyl root. Okay, which of the following is mismatched? इसमें polar nuclei plumule होगा. Okay. Pollen grain. A pollen grain जो है that is a haploid structure. The part of the flower that contains ovule is a carpel. Which of the following is mismatch? यहाँ पे pollen tube spores होगा. Students मैं एकदम completely डिटेल में नहीं जा रही हूँ. I expect तुम लोग को समझ में आ रहा होगा. और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ डू मैसेज, मैं उसको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दूँगी. 81 क्वेश्चन आर देयर. अगर मैं एक को भी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करूँगी तो इट विल टेक टू मच टाइम. तो आई होप यू ऑल्सो पीपल डू सम वर्क रिगार्डिंग दिस. Male gametophyte of the flowering plant produce sperms and female gametophyte produce egg. ये तो पता है. Seed are mature ovules whereas fruits are mature ovaries. A carpel is a closed vessel that contains an ovary in which egg develop, fertilization occurs and seed matures. After meiosis with the pollen sacs, haploid structures are formed which are called as microspores. Following meiosis in ovules, how many megaspores are formed? 4 form होता है. The seed coat is formed by which of the following integuments से form होता है? Integuments से form होता है. Cotyledons develop as a part of embryos. The male gametophyte of the angiosperm consists of the germinated pollen grain. A fruit is a ripened ovary. Which of the following is incorrectly paired? तो इसका ovary और gametophyte होगा. Okay. Coming on to question number 46. The double fertilization both the sperm nuclei enter the embryo sac. हाँ ठीक है, क्योंकि दोनों फर्टिलाइज नहीं करता है, एक सेल को एक फर्टिलाइज करता है. ओके. The basal cell in the zygote form the suspensor that anchors the embryo and transfers nutrients. A fruit is a ripened ovary. Which of the following statements about hypocotyl hook is not true? इसको लीव भी कर दो क्योंकि हमने डिस्कस नहीं किया था hypocotyl hook के बारे में. बट इसका आंसर होगा इट इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू एमर्ज फ्रॉम द डाइकॉट सीड. Which of the following condition is needed by almost all seed to break dormancy? Imbibition की ज़रूरत पड़ेगी. Which of the following is not the example of the artificial propagation production of? इसका आंसर होगा D. Production of fruit without fertilization in parthenocarpic plants. Which of the following terms is incorrectly match? Embryo sac or female gametophyte. Which of the following structure is unique to the monocot? कोलियोप्टाइल्स ही होता है. कोलियोप्टाइल्स और कोलियोराइजा. डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द टिश्यूज दैट हैज़ बीन ड्रॉप एंड सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, इट इज़ कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इन प्लांट्स ओनली a sporophyte produce spores. The megaspore mother cells and the microspore mother cells divide meiotically. दोनों meiotic division होता है. कौन सा इसमें फ्रूट नहीं है? कॉलीफ्लावर. Animal assist with pollination and seed dispersal. A seed contains seed coat, embryos, stored food. Triple fusion involves fusion of the second male gamete with the 2 polar nuclei. हाँ ठीक है, डी वाला होगा. Which one of the following plays a significant role in the maturation of in the nature of the fruit development from flower? fertilization होगा. How many meiotic division are required to produce 400? तो इसका आंसर होगा 100 क्योंकि एक 4 में डिवाइड करता है तो 400 ऑब्वियसली 100 की डिवीजन से ही बनेगा. Which of the following is a post fertilization event in the flowering plant? Embryo development. When the number of chromosomes in the shoot tip of the wheat plant is 42, the number of chromosomes in the microspore mother cells will also be 42. Okay. Microspore mother cells. Okay. During microsporogenesis, meiosis occurs in microspore mother cells. The phenomena where ovary develop into fruit without fertilization is parthenocarpy. After fertilization, the integuments of the ovule develop into seed coat. The dicotyledonous plant
bears flowers which never produces fruits and seeds. The most probable cause for the above situation is they may be dioecious and bears only staminate flowers. Question number 69. From among the sets of the given identify those are associated with gynoecium. तो obviously ovary ovule ही होगा. Autogamy can occur in chasmogamous flower if both an ovules and pollen grain mature simultaneously. Chasmogamous फ्लावर्स में तभी होगा जब दोनों ओव्यूल और pollen grain साथ में मैच्योर होगा. Choose the correct statement from the following. Clistogamous flowers always exhibit ऑटोगैमस. ऑब्वियसली वही होगा क्योंकि क्लिस्टोगैमस क्या होता है, क्लोज्ड फ्लावर जिनके पेटल्स जो है क्लोज करके रखते हैं, तो obviously they will undergo autogamy only. The monocotyledonous plant produce light non-sticky pollen in large number and its stigmas are long and feathery. These modifications facilitate pollination by winds. In fertilized embryo sac, the haploid and the diploid and the triploid structure are antipodal, zygote and primary endosperm nucleus. मतलब ये तो एकदम से ही श्योर है कि ट्रिप्लॉइड की बात हो रही है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ही होगा. While planning for the artificial hybridization program involving dioecious plant, which of the following steps will not be relevant? Artificial hybridization, which of the following steps will not be relevant? तो इसका होगा emasculation, वाई. अच्छा, डायोशियस प्लांट में क्यों हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये इमेस्कुलेशन एक्चुअली होता है क्या, एंथर को कट करके रिमूव कर देना. ओके, तो एंथर को कट करने की ज़रूरत हमें डायोशियस प्लांट में इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि डायोशियस प्लांट का मतलब ही है कि वहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही पाया जाएगा. दैट मीन्स उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है एंथर रिमूव करने की. ओके, एंथर हम रिमूव एक्चुअली क्यों करते थे, क्योंकि ताकि उसी प्लांट के एंथर्स जो है उसी प्लांट के स्टिग्मा पे या ओव्यूल्स को फर्टिलाइज ना कर पाए. बट अगर प्लांट ही डायोशियस है दैट मीन्स उसमें यूनिसेक्सुअली फ्लावर है तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. 75. The phenomena observed in some plants wherein parts of the sexual apparatus is used for forming embryos without fertilization is apomixis. Which of the following plants reserve food material in its inflorescence? Cauliflower. The point where funicle is attached to the body of ovule is hilum. Double fertilization means one male gamete fuses with the egg and the other secondary nucleus. The entry of the pollen grain through integument is called mesogamy. So mesogamy बोलते हैं. तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया तो none of these will be the option. The father of the Indian plant embryology is P. Maheshwari. Polyembryony term was discovered by Leeuwenhoek. तो स्टूडेंट्स एक बार आंसर्स भी मैं तुम लोग को यहाँ पे दे रही हूँ, देख लो आंसर्स तुम लोग. इसे एक बार ज़रूर सॉल्व करना. कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना मुझे. ओके, थैंक यू.